Very good morning. You're watching live and breaking on Republic TV. The top story that we are tracking for you is the flash floods that have happened in Uttarkashi, and this after the cloudburst. And we have breaking news coming in. Prime Minister Narendra Modi has spoken to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, and he took stock of the situation in Uttarkashi. They spoke over the phone and he inquired about the recent natural disaster in Dharali area in Uttarakhand district, and also the updated status for relief and rescue operations. Meanwhile, Chief Minister of the state, Pushkar Singh Dhami, has reached Uttarkashi from Dehradun, and he has reached Joshimath, and he is going to inspect the areas and take stock of the situation as far as Uttarkashi flood is concerned. Remember, 4 people have died and at least 50 others have been missing. This after cloudburst struck Uttarkashi district on Tuesday afternoon, and that triggered flash floods in Dharali village, which is a little down the altitude, and the flood led to houses falling like a deck of cards, and they were swept away. So the raging waters flowed down to different sides of the hill and led to massive destruction on the way. And what we understand right now is that the Chief Minister is taking stock of the situation. He is inspecting the areas that have been affected by the floods. And Prime Minister Narendra Modi also spoke to him, and he took an update on the relief and the rescue operations in the state as well. Remember, 4 people have already died, and there are several others that have been washed away, and they are missing right now. 50 people so far are missing right now, and among them are also some of the army personnel as well. And this after flash floods triggered a real massive destruction on the way and caused. All right, let's first listen in to what the Uttarakhand Chief Minister said as he was taking stock of the situation. अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है, और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है, और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का हम जैसे जा रहे थे तो हम रात को यहीं फंस गए हैं, क्योंकि ये मलबा आ रखा है। और हमारे जो सीएफओ साहब हैं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वो कल ही चले गए थे शाम के समय जी। अभी क्या किसी और रूट से भी आप लोग की टीमों को भेजा जा रहा है? अभी गए थे सर, हम यहाँ से लिंक रोड है पीछे 2-3 किलोमीटर, तो हम यहाँ से घूम के गए थे लगभग 25 किलोमीटर। तो आगे जाने के बाद में 3-4 जगह पे मलबा आ रखा है,
तो उस मलबे की वजह से फिर गाड़ी आगे गई नहीं, तो वापस घुमा के फिर यहीं आना पड़ा। और कोई ऐसा रूट नहीं है जिससे हम उत्तरकाशी के लिए चले जाए। कोई और रूट अभी जी, अब ये रास्ता खुलने का ही वेट करना पड़ेगा। सलोनी, देखिए मुझे भी दिल्ली से चले लगभग इस समय 19 घंटे हो चुके हैं। 19 घंटे तक मैं यहाँ तक का मैं सफर तय कर पाया। लगातार अभी भी परेशानी हो रही है क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें जो यहाँ पर देखिए रोकी गई हैं, उनको भी मैं दिखा रहा हूँ, वो भी इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि आखिर कैसे वो अब आगे जाएंगे। तमाम देखिए अधिकारी और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं उनकी देखिए संख्या में अगर आपको बताऊं, देखिए इधर भी तमाम देखिए जवान खड़े हैं फायर ब्रिगेड के, जो प्रशासन ने भेजा यहाँ पर ताकि ये लोग भी उत्तरकाशी के धराली गांव यहाँ पर पहुंचे मदद करने के लिए। सर, कितने लोग अभी आप लोग हैं और क्या कुछ अभी ऑपरेशन आप लोग को बताया जा रहा है? 6 लोग आए हैं सर अभी हम यहाँ पे। जी, ये हमने नगर से आए थे। आगे के हालात के बारे में कोई जानकारी आप लोग को दी जा रही है? तो कुछ नहीं है सर अभी कुछ नहीं है। जी सर। तो उम्मीद लग रही है कि अभी जल्दी आप लोग निकल पाएंगे, क्या लग रहा है? सर क्योंकि यहाँ पे कंडीसौड़ के पास रोड ब्लॉक हो रखा है, तो जेसीबी काम पे लगी है, लेकिन बहुत दिक्कतें भी सामना देखने को पड़ रहा है। और आगे सुनने में आ रहा है कि आगे भी रोड ब्लॉक हो रखी है, तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि टीमें जो है वो रवाना हो चुकी है वहाँ पे लोकेशन पे जहाँ धराली गांव में जो आपदा आई है। तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है दोस्तों। देखिए, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि मौसम साथ नहीं दे रहा है। अभी उत्तराखंड में उत्तरकाशी के इन इलाकों में देखिए घने बादल आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। अभिषेक, दिखाइए, देखिए कैमरे पर जब आप देख रही होंगी, फॉग जब आपको दिखाई दे रहा होगा, इस समय बादलों के बीच हम खड़े हैं क्योंकि इस समय लगभग समुद्र तल से हम 1300 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं सलोनी, अनामिका। तो ऐसे में अंदाजा लगा पाना देखिए बड़ा मुश्किल है। और तस्वीरें देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं। इस समय क्या कुछ और अपडेट है जानेंगे अन्य सहयोगी से भी। All right, that is our reporter Sagar reporting from Uttarkashi there, and he there mentioned about really the twin problem that the rescue operations are also having challenges for, and that is that there is rainfall also happening, and we are now getting you fresh visuals of the rescue and relief operations being carried out by the Indian Army and the ITBP. So the ITBP and the Army, they're carrying out rescue operations. And as you can see that despite challenges, there is rescue and relief operation. They're being carried out by the Army personnel. Remember, a few Army personnel are also missing in the flash floods so far. And heavy rainfall continues in several parts of the state as well. And the Meteorological Department has also issued warnings about more downpour in the state. And that is actually also leading to slowing of the relief and the rescue operations. But the process is continuing. The rescuers... all right, my colleague Ratan Legi is on the phone line with us. रतन, ये बताइए कि अभी ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि जिस तरह से सागर हमारे कुलीग भी बता रहे थे कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में थोड़ी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि वेदर भी जो है वो साथ नहीं दे रहा है। लेकिन इस समय मुद्दा ये है कि किस तरह से जो लोग दबे हुए हैं या जो लोग मिसिंग है उनको किस तरह से निकाला जाए, उनको कैसे ढूंढा जाए। अगर हम बात करें तो वहाँ पे वॉश आउट हुआ है, एसडीआरएफ अंडर के जवान वहाँ पर फंसे, तो कनेक्टिविटी में दिक्कतें आ रही है। वायुसेना के जहाज जरूर तैयार है अपने बेस कैंप पे, लेकिन उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। सड़कों की स्थिति आपके सामने, बड़े बड़े बोल्डर ये खड़े हैं, आप देख सकते हैं। जेसीबी प्रयास कर रही है इन पत्थरों को हटाने का, लेकिन वो कितना यहाँ से इन पत्थरों को हटा सकती है, ये चुनौती भरा है क्योंकि बड़ी पॉगलेन मशीन की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है। अब तक 160 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 5 लोगों की दुखद मौत की जानकारी यहाँ पर है। All right, that is our reporter there. We have Sagar and Ratan who are there in Uttarkashi. They are reporting live on the relief and the rescue operations that are presently going on. Remember, there are 4 people who have already died, and the Chief Minister of the state is also going to visit the affected areas. He is on the way. And Prime Minister Narendra Modi has also spoken to him and taken stock of the situation there. So this cloudburst in Uttarkashi district has caused flash floods. It has wreaked havoc, especially in the high altitude areas of the state, and especially the village of Dharali has been the worst affected. And 4 lives have been lost in the state. At least 130 people were rescued earlier, but there are many more that are still missing. So there were
two cloudbursts. One happened in Dharali, another in the Sukhi Top area, and those caused widespread destruction. Dharali really bearing the brunt, maximum brunt there, and we can see the visuals of Chief Minister there, Pushkar Singh Dhami. He is inspecting the flood-affected areas in the state, and these are the live visuals that we are getting on the Chief Minister of the state inspecting the areas and taking stock of the situation there. And the weather is really not helping either. There is intermittent rainfall that is happening in many parts of the state, and that is sort of hampering the relief and the rescue operations. But efforts are continuing on a war footing. There are multiple teams, the Indian Army, NDRF, SDRF, ITBP. There are dogs, army dogs that have also been deployed to carry out the relief and the rescue operation. Big machines need to be put into service in order to move the big boulders and to make sure that there is nobody that is stuck there beneath the debris. And the JBL big machines are ensuring that they carry out removal of the big boulders and the mud there. So at least 130 people were earlier rescued, and more relief and rescue operations are continuing in the state. Meanwhile, we can see these visuals of the Chief Minister. He is inspecting the flood-hit areas, and emergency numbers have also been issued by the state. For anyone in distress can call up these numbers. These emergency numbers have been issued. The Indian Army has also deployed its own personnel, as well as army dogs, as well as drones. Earth-moving equipment have been deployed for the evacuation purpose, and also providing essential supplies. And the state Jal Board and the electricity department are also working in tandem with the other authorities to make sure that the electricity and water supply is restored in the areas that have been hit. So heavy rains also continue to pound Uttarkashi, even as rescuers continue their operations today, especially in Dharali village. And they're searching for the flood victims amid the rubble. So the entire Dharali village, which was very picturesque till yesterday, it was ravaged really by the floods yesterday afternoon. And this village is the main stopover if we go on the way to Gangotri. That is where this village lies. And this village is completely destroyed. 4 deaths have been so far confirmed in the flash floods. And this is after this cloudburst that happened yesterday afternoon. 130 people have been evacuated to safety, and more of the operations are continuing to search for more people. The Indian Army has also deployed its Chinook helicopters as well as Mi-17s, and that is to look for anybody who could have been